Hello guys, so now I'm going to a garage for the bike wash and as well as मैं टायर का कुछ काम भी करवाऊंगा क्योंकि जो है वो बेसिकली दो तीन नेल्स घुसा है अंदर तो मेरा टायर खराब हो गया है तो उसको मैं ठीक कराऊंगा बेसिकली देर देर इज़ अ प्रोसेस मतलब उसको चाका खोल के अंदर से पेस्टिंग करना होता है सो देर इज़ अ प्लेस वेयर generally I go to for washing and for this kind of stuffs. So again मैं वहीं पे जा रहा हूँ और मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी है वो भी वॉश कराएगा. सो यही है जाम को थोड़ा कटाते हैं. Let me cross the traffic and then I will move forward. The पूजा पेंडल अभी तक भी यहाँ पे है, अभी तक भी है. यार यहाँ पे सिग्नल नहीं है, इतना खराब तरीके से गाड़ी चलता है ना, क्या बोले. खैर जो भी है. देखो भाई, द थिंग इज, as I mentioned earlier on my introduction video, that my vlogs will be very raw. उसमें कोई सिनेमेटिक शॉट कुछ ऐड नहीं होगा. ये देखो, ये टोटो वाला अजीब इंसान है यार, तो देखता ही नहीं है डांडिक वांडिक, सीधा चले जाते हैं. सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट. तो बेसिकली मेरा जो व्लॉग्स होगा वो पूरा एकदम रॉ होगा. कहीं से चालू कर सकते हैं, वो मेरा मर्जी, पता नहीं, आपको अच्छा ही लगेगा क्योंकि उसमें कोई रंग चढ़ा के कुछ नहीं करूँगा मैं. जो होगा कम्प्लीटली रॉ. एंड स्पेशली मैं स्टार्ट किया था बंगाली से क्योंकि मैं कलकत्ता से हूँ, बंगाली हूँ. और वहाँ से हिंदी और स्पेशली इंग्लिश में करता था. उसके बाद मैं सोचा कि भाई बहुत सारा पेरीफेरी से मेरा ब्लॉग देखता है. स्पेशली मेरा ऑर्गेनाइजेशन से जो लोग हैं वो लोग सभी बंगाली है और हिंदी भी समझते हैं, तो मैं हिंदी और इंग्लिश, इट विल बी मिक्स लैंग्वेज फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर better clarity. Okay, and what do I say? So now we have to go to on the right side. By any chance I lost the road? Unfortunately I lost the road. Unfortunately I lost the road. Okay, okay, sorry, it's not that, the right side, straight. So हम लोग को सीधा जाना पड़ेगा. वो पुलिस जैसे हाथ दिखा तो मैं सोचा कि भाई मुझे साइड कर रहा है क्या. उसके बाद नहीं देखी, मैं तो फॉर्मल में हूँ आज और ब्लॉग सेटअप कर रहा हूँ. यहाँ पे तो मना नहीं है, सब करते हैं, मैं भी करूँ, मैं क्यों ना करूँ. दिखाता हूँ कि बाज़ार एरिया से जाना कितना डिफ़िकल्ट होता है भाई, बहुत डिफ़िकल्ट होता है. और ये जो टोटो जहाँ पे चलता है ना, वेस्ट बंगाल में हर ज़िले में ये टोटो चलता है. ये बहुत मतलब गंदे तरीके से चलाते हैं. ये इंडिकेटर विंडिकेटर नहीं लगाते हैं. पूजा के टाइम तो कलकत्ता में भी जो ऑटो होता है वो बंद कर देता है, लेकिन यहाँ पे बंद नहीं किया. ठीक है, सबका ही ड्यूटी रोजगार है, करना चाहिए, लेकिन अगर डिसिप्लिन फॉलो रहेगा तो सबके लिए अच्छा होगा, उनके लिए भी अपने लिए भी. Anyways, so let's get back to the point. So yesterday I've installed the mic setup, the camera setup, and today is the first vlog.
for me. It's a brand new start. It's a fresh start. All I can say is Roadside Journeyman has stopped due to some personal stuff. Like मैं प्रोजेक्ट में ज़्यादा देर तक रहता था तो ब्लॉग नहीं कर पाता था। तो वही है, आईटी वालों के लिए फोटो ब्लॉगिंग करना तो सिनेमेटोग्राफी करना बहुत डिफिकल्ट है। खैर, आई एम बैक टू द channel again and hope you will like it. In some coming days or coming months, there are few good places I will explore. And वो जो जगह मैं जाऊंगा ना भाई, मैं बोल देता हूँ कि वो सब जगह में जनरली लोग जाते नहीं है, मतलब बाहर का लोग जाते नहीं है, सब लोकल जाते हैं। ये सब रोड में जाऊंगा और ये सब जगह आप लोगों को सबको दिखाऊंगा। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड एवरी वीडियोस, जो वीडियो अपलोड होगा उसको आप प्लीज़ देखें। आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा, डेफिनेटली अच्छा लगेगा। क्योंकि देखो भाई, मेरा वो कपल टाइप का व्लॉग नहीं है ना, तो मैं मेरा फूड टाइप का व्लॉग है। मेरा जो होगा रॉ होगा, डेली लाइफस्टाइल के ऊपर होगा और जिसमें बाइकिंग रहेगा, बस वही है। तो फिलहाल मैं आ गया अपने गैरेज पे, जहाँ से हम लोग All you can see is they have examined the tire, the rear tire. It is not at all, कोई लीकेज नहीं है, कुछ नहीं है, ऑल गुड। एंड जो मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो करेगा अभी, इस चाका को खोल के पूरा अंदर से पेस्टिंग करेगा ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दैट्स व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू डू। सो बने रहिए। इफ़ यू कैन सी द पल्सर बाइक, इट्स एंड इसका नाम क्या है भूल गया, पिलोबेली या कुछ बोलता है उसको। तो ये बहुत एग्रेसिव दिखता है, बहुत एग्रेसिव दिखता है देखने में। ये जो बोलता है क्या, अपर बेली या बेलो बेली ऐसा कुछ बोलता है उसको। इट्स वेरी नाइस। और साइड से बहुत एग्रेसिव दिखते हैं ये बाइक, बहुत एग्रेसिव दिखते हैं, है ना। इसको क्या बोलता है, अपर बेली या तो बिलो बेली ऐसा कुछ बोलते हैं ना, जो एग्जॉस्ट है। अंडरबेली अंडरबेली एग्जॉस्ट, यस अंडरबेली एग्जॉस्ट। इट लुक्स वेरी नाइस एंड साइड से इसका जो साइड प्रोफाइल है बहुत बहुत एग्रेसिव है। बट मेरा वाला जो मैं देख पा रहा हूँ, ये इसका हालत ऐसे कर दिया ये लोग, बहुत अजीब लग रहा है देखने में। स्टिल इसको नहाएंगे धोएंगे, उसका पूरा वैश करेंगे, वैक्सिंग करने के बाद तो एकदम सही हो जाएगा। दैट इज़ द प्रोसेस टू रिमूव द टायर फ्रॉम द व्हील बेस। सो दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव थिंग। कुछ होने से क्या होता है ना, वो जो व्हील का जो बेस है वो टूट सकता है, या तो उसमें स्क्रैचेस आ सकता है। उसका जो ब्लैक कलर का जो ओरिजिनल कंपनी का दिया हुआ कलर होता है, तो इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। So this is a very sensitive thing, but they are taking care of very, you know, in a professional way. So I especially like them. The chain and its sprocket, I mean the chain drive, it's getting very dry, you know. So I need to lube the chain as well as I need to clean this chain. See? Oh goodness. What the hell has happened? What's wrong with my chain? अगर ऐसा रहा तो चेन जल्दी ख़राब हो जाएगा, 1 साल भी बाइक का नहीं हुआ। खैर इसको क्लीन करवाएंगे फॉर श्योर। नाउ द टायर, द अंडर सेक्शन ऑफ द टायर इज क्लीनिंग एंड वी हैव फाउंड देयर आर 5 nails was inside. My tire is completely fucked up. I need to change the tire as soon as possible. Anyways, so let's see what happens. So the bike is all set. You can say that all are shining. खैर चलो, this is all good. Let's go.
So it's so nice to wow. Now the chain is getting nice. The tire pressure is all good, and the fluency of the bike is so nice. And okay, so this is not the highway actually. I need to follow him because he's the only person who can guide me all the way from here to my destination. Anyways, so basically his bike, I rode a bit just to check his clutch condition because he was not aware the clutch is good or bad. मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि there is something wrong with his clutch. So I have checked, and the Pulsar NS 160 is like very, what do I say? It's a God, what it's called? It's basically I don't say it's an aggressive type of bike, but the posture is pretty sporty, and I like to ride that kind of bike where I can lean my head, okay, and the footrest will be a bit upper, so that what I can do is I can lean left and right well. So my AFC is pretty well. AFC is pretty well, all I can see, and I can confirm that if you want to plan to buy for a good mileage, a good road grip, um, power braking, obviously, braking is a big, very big factor. तो आप एफ जी ले सकते हैं यामा का और मेरा बहुत फेवरेट ब्रांड है यामा इट्स नॉट दैट जस्ट आई एम a big fan of Valentino Rossi, but still I really like it. See, I'm leaning it. I'm leaning all the way right side, so it's pretty, confident. I'm pretty confident while I'm leaning. And what do I say? All good so far. So this is it for now. Uh, I've got the thumbnail after washing two bikes, so you'll check it afterwards. And especially, I love this bike now. I'm happy riding this bike. And the most important thing is there was five nails, and I only repaired two of them. And I didn't even know that mm, there is no sufficient, you know, there is no sufficient uh, air inside the rear tire. That's the balance of the bike. This is very well distributed. I mean, well balanced distributed. Anyway, let me close this vlog for now. Okay, have a good time. Thanks for watching this and that. So I love you guys. Take care. Bye. Cheers.